The RSS chief, Mohan Bhagwat, has reiterated his Hindu unity pitch. He says that Hindu society should stay united and use the same temples, crematoriums and water sources. In fact, he said that instead of disputes between any ethnic or religious group in the society, we should work with each other in a spirit of respect and cooperation. The RSS chief, Sarsang Chalak, Mohan Bhagwat speaking. Take a listen in. मेरे अपने कार्य क्षेत्र में जितने प्रकार के हिंदू मानते हैं लोग, हम तो सब हिंदुओं को एक मानते हैं, लेकिन लोग उसमें जात पात देखते, भाषा देखते, सब देखते हैं। तो जितने प्रकार बाहर के लोग मानते हैं हिंदुओं के, उन सब प्रकारों में मेरे अपने मित्र होंगे, मेरे कुटुंब के मित्र कुटुंब भी उन सब लोगों में होंगे। आना जाना उठना बैठना जैसे मित्रों का और कुटुंबों का चलता है, वैसा हमारा चलेगा। ये हमको करना है, हमको करके फिर समाज को बताना है। ये कोई भी कर सकता है, आसान बात है, लेकिन करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं होगी। आज समाज का जीवन ऐसा हो गया है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। वो मित्र बनने चाहिए, उनके सुख दुख में हमारी भागदौड़ चाहिए, उनके घर आना जाना चाहिए, उनका हमारे घर में आना जाना चाहिए। सब जाति वर्ग के, सब पंथ प्रांत के, सब भाषा भाषी, इसमें हमारे मित्र और हमारे कुटुंब के मित्र होने चाहिए। All right, that was the RSS chief reiterating the call for Hindu unity, saying that have to ignore the talks about castes and different languages. All right, we shift our focus to other stories making news from across the country. Viewers, now this is Bharat in 2 minutes. Bhopal is set to host the Global Investor Summit 2025, marking a pivotal moment in Madhya Pradesh's journey towards becoming a global industry hub. With the preparations in the final stages, the summit will attract delegates from 60 countries, including 13 ambassadors, 6 high commissioners, several consul generals representing key strategic nations. It will showcase the state's investment potential and strategic advancements. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to inaugurate the Global Investor Summit 2025 in Bhopal, in which representatives from over 60 countries and 300 major business leaders from India are expected to participate. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has expressed confidence that the Global Investor Summit will elevate the state to new levels of development and open many employment opportunities for the youth. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने आप में मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी हमारे विकास की एक नई इबारत लिखने की बड़ी मैं मान के चलता हूँ कि एक ऐतिहासिक घटना रहेगी। As Bhopal gears up for Prime Minister Narendra Modi's visit to inaugurate the Global Investor Summit, Union Minister Jyotiraditya Scindia says that event will give a new rise to Madhya Pradesh. He further went on to say that the CM has worked very hard in the last 6 months to create a suitable environment for investment in the state.